Sri Avimuktesh Jagadguru Shankaracharya Avimukteswaranandi is visiting Hyderabad on 9th of October and having a function and give a discourse and pravachan at Ravindra Bharati. He is visiting all the 33 state capitals every day, and he is propagating that Gau should be made as a Rashtra Mata is treated as this thing. Remove from the state subject to the Pashu subject to the Mata subject to the Gau. In that this thing, it is going to make a revolution, because Sri Jagadguru Shankaracharya himself is propagating and moving the entire country to make it as a Rashtra Mata. So I have no doubt in my mind that all the parties, BJP, Congress and every party will take up that issue. Otherwise, it is going to be one of the main election campaign for entire India voters. It is a very important to the entire country, all 100 crore people. If this is not made at the earliest, if the Gomata is not declared as Rashtra Mata at the earliest, this is going to be a big issue in the entire country and going to become a very election issue in whenever the next elections are there. I hope all the government will accede to this thing and do the good things. Thank you. Today we have arrived in Telangana, Hyderabad to conduct a press conference on the behalf of Jagadguru Shankaracharya Ji Maharaj. Shankaracharya Ji is traveling abroad the nation to declare cow as the mother of the nation. And we are very clear about the topic that cow should not be treated like an animal, and she should be called as mother. So to declare cow as mother of the nation, in whole India, we are trying to taking the various rallies. In 33 days, we will conduct 33 rallies in the capital of all the states of India. So we urge the peoples of Telangana to join this movement and be the part of that movement to declare cow as mother of the nation and make the country proud, because the country is also depend on our cow, and all the economical principles, all the aspects are related to cow. And as a Sanatani, as a Hindu, we honor cow, so declare cow as mother of the nation. Thank you. गौध्वज स्थापना भारत यात्रा जो ज्योतिर्मठ के जगतगुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज श्री करने वाले हैं, 22 सितंबर 2024 से शुरू होकर 26 अक्टूबर 2024 तक ये यात्रा चलेगी। इस यात्रा की शुरुआत भगवान श्री राम की पावन भूमि जन्मभूमि अयोध्या धाम से शुरू होगी और फिर पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को पूर्ण करते हुए तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद में 9 अक्टूबर 2024 को शंकराचार्य जी आएंगे, गौ ध्वज की स्थापना करेंगे और गौ भक्तों को संदेश देंगे। इस यात्रा के पीछे एकमात्र उद्देश्य है कि गौ माता को पशु सूची से हटा करके माता की सूची में रखा जाए। हमारे यहाँ वेद कहते हैं गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है, तो माता की सूची में गौ माता को स्थापित करें, इसी के लिए ये यात्रा है। साथ ही इस यात्रा का एक उद्देश्य ये भी है कि भारत भूमि के ऊपर से गौ हत्या का कलंक पूरी तरह से समाप्त होना चाहिए। यदि गौ हत्या के कलंक को इस देश से समाप्त नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब हम गौ माता को इस देश में देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रतिदिन हजारों की संख्या में स्लाटर हाउस के माध्यम से गायों का कत्ल हो रहा है। तो गायों का कत्ल बंद होना चाहिए, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित होना चाहिए। इसके लिए शंकराचार्य जी इस यात्रा को कर रहे हैं। इस यात्रा का समापन दिल्ली में गोपाष्टमी के दिन 9 नवंबर को होगा। गौ माता, गौ माता, गौ माता।